Good morning and assalamu alaikum students. How are you all? I'm your teacher from Gaz Public Higher Secondary School 1. Welcome to the audio visual session of lecture 4. So far we have covered Pippi Longstocking, Pip meets a convict, Anansi and Five, and today we will be doing a poem from a railway carriage. Let's have an introduction of the author. The poem from A Railway Carriage is written by Robert Louis Stevenson. He was born in 1850 and died in 1894. He was a Scottish novelist, poet, and essayist, and he wrote many exciting stories and poems on different subject matters. Faster than ferries, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like troops in a battle. All through the meadows, the horses and the cattle, all of the sides of the hill and the plain, fly as thick as driving rain, and ever again in the wink of an eye, painted stations whistle by. So actually in this poem, the poet रॉबर्ट स्टीवनसन इज़ टेलिंग दैट जो ट्रेन का सफ़र है, जो रेलवे कैरेज है, उसको कंपेयर किया है फेरीज से, उसने विचेस से किया है कि किस तरह वो फास्ट चल रही होती है ट्रेन, उसकी स्पीड को, उसके पेस को कंपेयर किया गया है फेरीज़ के साथ, विचेस के साथ। और वो बता रहे हैं कि जिस तरह वो तेज़ चल रही होती है, ऐसा लगता है कि बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं, जो उनका ट्रूप है, दे आर रेडी फॉर द बैटल एंड दे आर चार्ज एंड दे आर रशिंग टूवर्ड्स द बैटल। सो कंपेयर किया है रेलवे को कि किस तरह वो तेज़ चल रही है। और फिर बताया ऑल थ्रू द मीडोज़ द हॉर्सेस एंड कैटल, और जैसे जैसे ट्रेन का सफ़र चल रहा होता है हमें हिल्स भी नज़र आते हैं। मीडोज़ कहलाते हैं ग्रास लैंड को, तो वो कह रहे हैं हमें ग्रास लैंड भी नज़र आते हैं, हमें माउंटेन्स नज़र आते हैं, हॉर्सेस, कैटल, प्लेन, ये सारी जो साइट है, जो सारा जो नज़ारा है, इतना ब्यूटीफुल लग रहा होता है। और वो कह रहे हैं जैसे जैसे ट्रेन आगे चलती जाती है तेज़ अपने सफ़र पर, इसी तरह विंक ऑफ एन आई मीन्स पलक झपकते ही ये सारी पेंटेड चीज़ें, मतलब ये खूबसूरत चीज़ें जो नेचर की बनाई हुई हैं, वो हमारी आंखों से ओझल हो जाती हैं, गुजर जाती हैं। Here is a child who clambers and scrambles, all by himself and gathering bamboos. Here is a tramp who stands and gazes, and there is the green for stringing the daisies. Here is a cart run away in the road, lumping along with man and load. And here is a hill and there a river, each a glimpse and gone forever. Now दे आर कंपेयरिंग रेलवे विद द चाइल्ड, कि जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है, चलना सीखता है तो चलते चलते वो हिलता भी है, ठीक है, गिरता भी है कॉल करते हुए। तो इसी तरह ट्रेन का जो सफ़र है, अगर आप में से किसी ने ट्रैवल किया हो तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जो जिस तरह वो चल रहा हो, ट्रेन चल रही होती है तो फिर झटके भी आते हैं, ठीक है। तो इसी तरह स्क्रैम्बल का वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है उस रेलवे के लिए। और फिर आगे बताया है कि उसी सफ़र में हम लोग को बहुत सी खूबसूरत चीज़ें नज़र आती हैं, और ऐसा लग रहा होता है कि जो रेलवे है वो अ, अपना उसने लोगों का भी सामान उठाया हुआ है और लोगों को भी उठाया हुआ है, क्योंकि लोग भी मौजूद होते हैं और सामान भी मौजूद होता है। तो बताया लंपिंग अलॉन्ग विद मैन एंड लोड, तो उसने अपने सर पे जो ट्रेन है उसने इंसानों का भी वज़न उठाया होता है और चीज़ों का भी वज़न उठाया होता है। एंड हेयर इज़ अ हिल एंड देयर अ रिवर, फिर हम देखते हैं कि एक साइड पे हम लोग को खूबसूरत हिल नज़र आ रहा है, ठीक है, और एक साइड पे हम लोग को बहती हुई नदियाँ, रिवर नज़र आ रहे हैं। ईच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर, और थोड़ी देर बाद जैसे जैसे ट्रेन आगे जाती है, रेलवे आगे जाती है, और ये सारे नज़ारे एक ही ग्लिम्स में, एक ही झटके में सारे ख़त्म हो जाते हैं फॉर एवर। Let's see the words which we have taken from the poem. Charging, charging means rushing forward. Driving rain, rain falling very heavily. Lumping, moving awkwardly. जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि रेलवे को लंपिंग का वर्ड इस्तेमाल किया है कि किस तरह वो झटकों से चल रही होती है। Meadows, areas of grassland. Scramble, to move quickly or awkwardly. Troops, group of soldiers. Central idea of the poem from a railway carriage. This poem from a railway carriage is written by Robert Louis Stevenson. He writes about the things which we can see from a railway carriage.
He tells that a person traveling by rail has a chance of seeing the natural beauty and the changing scents fill a person with pleasure. So, for home assignment, you have to write the central idea in your copy and you have to learn it.